भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 49। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपिताभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। अब दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं रखता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form you desire. Purport. In the beginning of Bhagavad Gita, Arjun was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfather and master. But Krishna said that he need not be worried of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty they should be killed. You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form you desire. Purport. In the beginning of Bhagavad Gita, Arjun was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfather and master. But Krishna said that he need not be worried of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty they should be killed. Krishna showed his universal form to Arjun just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of revelation of the universal form was shown. Now Arjun wanted to see the four-armed form, and Krishna showed him. A devotee is not much interested in the universal form, for it does not enable one to reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer his respectful worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Krishna form so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead.